तो variables रे हम देखितले जे Linux रे गुटे variable रोची one type of variable that's called the special variables. So what is that special variables and what is the benefit of using that? See, special variable जोटा हमें कहूचे Linux रे जोटा कि already reserved in Linux. Okay, these variables are reserved for specific functions use. किसी specific function specific program तमे लिखिबा पई variable को reserve करिकरी रखा अछि. तो variable who type of variables use होछि जोटा कि आमे तमे दी ए particular स्क्रीन टा देखिबो राइट ए टेबल टेबुलर फॉर्मेट रे बनाई छी जोटा कि $0 तो $0 जदि आमे यूज करबा what it will display? It will display the file name of the current script, current program. Okay, it will display the current program. Okay, whatever the current script you are using, तुम जदि कोनसी script रे $0 यूज करिचो तो $0 रो वैल्यू से कौन डिस्प्ले करिवो the name of the file name of the current script. Okay, अब सिर हमें completely गोटे छोटो small program करिवो ताबि से जानबा आ गोटे अछि $n. The $in कौन होची यूज होची these variables corresponding to the arguments with which a script was involved. तो जोटा हमें positional parameter को आ जाए बा हमरो command line argument हमें next slide रे पढ़िबा command line argument कोन तो command line argument रे हमें कोन करना किछि कोन argument पास करू किसी पैरामीटर पास करू तो से जतो पैरामीटर बा आर्गुमेंट पास करिबा तो सही टाइम रे हमरो कोन बना ए जो पोजिशनल पैरामीटर्स जो कहूची सेटा हमरो $n जोटा कि हमरो स्टार्टिंग फ्रॉम $1 $2 $3 like this until $n. Okay, until $n. So these are nothing but the positional parameters. Okay, so $n belongs to the any number. N belongs to the any number. Okay, n number to हमें argument pass करि परिबा कोडी जतबे हमें shell script गोटे run करी run time रे जतबे shell script गोटे execute करिबा तो execute time रे execution time रे हमें कोन करिबा ना किछ parameter बा argument pass करि परिबा आता को access करिबा पई use करिबा $n, right? The dollar has the number of arguments applied to a script. तो जितने नंबर हमें धरो 5टा आर्गुमेंट पास करले गोटे स्क्रिप्ट रे तो केतेटा नंबर रो आर्गुमेंट हमें पास करी छे राइट तो हमें वी कैन आइडेंटिफाई यूजिंग $hash. तो $hash रे हमें कैप्चर करि परिबा जे केतेटा आर्गुमेंट हमें पास करी छे राइट देन $* तो ये जो $hash ला टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ता से शो करिवो बट $* कोन शो करिवो ना ऑल द आर्गुमेंट्स आर डबल कोटेड इफ ए स्क्रिप्ट रिसीव्स 2 आर्गुमेंट्स सो इज इक्विवेलेंट $* इज इक्विवेलेंट टू $1 $2 त माने हमें जदी गोटे स्क्रिप्ट रे दुईटा बा तीनटा आर्गुमेंट पास करछे से तीनटा आर्गुमेंट को कोन करिवो ना डबल कोटेड रे शो करिवो कोन आर्गुमेंट केतना आर्गुमेंट पास करछा हम using $. तो ये सब तमे जदी यूज करबो these keywords already these variables are already reserved. Okay, you cannot use simply by calling or simply by adding something else, right? So these are the reserved for specific task. I would $@. So what $@ all the arguments are individually double quoted. ये कौन करिवो ना एटा कौन करिवो ना $* कौन करे सब जाकर जतिक रे मैं पास करछ सब जाकर डबल कोट भीतर शो कर दबो ऑल द आर्गुमेंट्स आर डबल कोट बट $@ रे तुम कौन करिवो ना से आर्गुमेंट जोटा हमर आर्गुमेंट से पटे से आर्गुमेंट को इंडिविजुअली डबल कोटेड धर हम दुईटा आर्गुमेंट पठेले गोटे 10 आ गोटे 12 से कौन करे 10 को डबल कोट रे शो करिवो 12 को डबल कोट रे 10 को डबल कोट रे शो करिवो और 12 को डबल कोट त माने ये दुईटा आर्गुमेंट हमर पास कराइछ राइट हम एग्जांपल रे देखिबा द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपोर्टेंट दिस वन इज द $? right so $? what it says the exit status of the last command executed जो लास्ट कमांड हमें एग्जीक्यूट करछे तार स्टेटस कोन
गोटे प्रोग्राम आम एक्जिक्यूट करवा राइट सो प्रोग्राम एक्जिक्यूशंस बेले से प्रोग्राम एक्जिक्यूशंस बेले आम जानिबा जे आम कोन प्रोग्राम एक्जिक्यूट करथिले तार स्टेटस टा कोन वर्तमान अछि वेदर दैट इज सक्सेस और फेल्योर किछि भी गोटे प्रोग्राम रो स्टेटस जानिबा पई लास्ट कमांड एक्जिक्यूशन स्टेटस लास्ट जो कमांड आम एक्जिक्यूट करथिले तार स्टेटस जानिबा पई आम डॉलर क्वेश्चन मार्क यूज करबा ये सब मन रखी था प्रैक्टिस करबा हम तुम क्वेश्चंस डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास से पचारि राइट तापर नेक्स्ट वन is nothing but the double dollar symbol. Right? So what double dollar symbol does? The process number, it shows the process number of the current cell. What it says? It shows the process number of the current cell. For cell scripts, this is the process ID under which they are executing. तो जो भी current cell the process number माने current cell रो कौन प्रोसेस नंबर प्रोसेस आईडी सेटा शो करे गोटे यूजी डबल आ गोटे अछि एटा भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट रहउछि जोटा कि डॉलर एक्सक्लेमेशंस बा डॉलर नॉट द प्रोसेस नंबर द लास्ट बैकग्राउंड कमांड तो हमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड विषय भी जानिबा राइट फोरग्राउंड केमती रन करे गोटे गोटे स्क्रिप्ट को कोन करे हमें तो एग्जीक्यूट करूचे राइट तो कोन होछि ना जो प्रोग्राम सब हमें नॉर्मली ए डेवलपर बा प्रोग्रामर लिखे प्रोग्राम तो प्रोग्राम कौन छि किछि प्रोग्राम जोटा अछि विद इन फ्यू सेकंड्स बा फ्यू मिनिट्स भीतर एग्जीक्यूट हे जो जदि किछि गोटे प्रोग्राम तमे स्मॉल प्रोग्राम लिखुछो से प्रोग्राम को तमे एग्जीक्यूट करूछो and it takes only few seconds then it's okay you can just execute and in the terminal you'll wait get the result and it's done if that program takes more than minutes right 5 minutes 10 minutes even some program takes hours of time right in that case what you will do you'll not wait until the program finishes you'll not run in the terminal and just watch it right what you'll do you'll run that program in the background तमे कोन करबे से प्रोग्राम को बैकग्राउंड रे रन करिवे माने आमे जेतु हम से प्रोग्राम टा एग्जीक्यूट कर दो हमको अलगा काम भी करिवार अछि ना कि से प्रोग्राम सरला पर्यंत हमें वेट करिवानी त हम कोन करिवा प्रोग्राम को बैकग्राउंड रे छाडी दवा से तार एग्जीक्यूट होतो तापर हमें अलगा काम हमें करिवा तो से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होतो जो बैकग्राउंड रे तार प्रोसेस नंबर जानिबा पीआईडी जानिबा पई राइट हमें कोन यूज करिवा डॉलर exclamation double exclamation okay बुझी पालो तो ये सब होला कोन किछ स्पेशल वेरिएबल्स गुड आरो गोटे छोटो स्क्रिप्ट लिखिबा ता विषय हम जानिबा और तुमको जेमति हम तुमको बतै दे स्क्रिप्ट तमे केमति लिखुछ देखो इट्स नॉट ए बिग डील गाइस राइट स्क्रिप्टिंग तमे गोटे छोटो प्रोग्राम तमे जदी ऑलरेडी डेवलपर ऑलरेडी किछि प्रोग्राम लिखिछ तमे कॉलेज लाइफ रे किबा ऑलरेडी वर्क ये रे जदी किछि भी लिखिछ प्रोफाइल कंपनी वर्क रे तो तुमको इजी लिखियो राइट गोटे प्रोग्राम लिखिबा पई राइट तो सेल्फ प्रोग्रामिंग रे भी कांसेप्ट इक्वली सेम बट बहुत इजी राइट बहुत इजी वे रे हमें प्रोग्राम गोटे लिखि परिबा राइट ता पई हमको किछि जेमति कि वेरिएबल जानले स्पेशल वेरिएबल जानले जो कमांड्स लिस्ट हम कमांड जेमति लास्ट क्लास कल स्क्रिप्टिंग रे में देखुतले राइट किसी सेट ऑफ कमांड्स को हमें एग्जीक्यूट करबा गोटे फाइल भीतर रखि के तो सेटा को हमें सेल स्क्रिप्ट करि परिबा राइट तो किछि गोटे प्रोग्राम लिखिबा स्क्रिप्ट लिखिबा से स्क्रिप्ट को हमें एग्जीक्यूट करबा तो ये सब इंफॉर्मेशंस बा जो लिखुछ स्पेशल वेरिएबल्स हो जहां भी कीवर्ड्स हम यूज करबो ताको मने रखबा पड़िबो राइट तो आज का डेट रे हम देखियो गले तो we cannot remember everything so what we can do we can rely on the internet right so तमर मेन थिंग कोन होछि ना हमको दरकार जे तमे कांसेप्ट जानथिबा दरकार it should be clear on the concept what we are learning right जहां भी करूचे not about learning whatever we are doing right तो जहां भी हम कहूचे ता कांसेप्ट मानता तो लॉजिक ता जानथिबा दरकार तो मते एई दिनसटा दरकार ता लॉजिक पकेबा को हेले तमे कंप्लीट वर्कफ्लो जानथिबा दरकार कंप्लीट मैनुअल वर्क जानथिबा दरकार राइट if तमे मैनुअल केमिति काम करछि तमे जानि नथिबो then how you can automate it you cannot automate it right everything anything you are going to automate you should know how manually it works
then you can automate it. Okay? The steps माने step को नहीं कि ही हमको automate करियो, right? अच्छा तापर हमें कमांड लाइन आर्गुमेंट पढ़िया कहीं मु कमांड लाइन आर्गुमेंट पढ़ी सारा परे हमें स्पेशल वेरिएबल किछि एग्जांपल शो करिया जोडा तुम इजी हबो बुझिबा पाए कारण जो किछि आर्गुमेंट जंती ई चारटा आर्गुमेंट अछि स्पेशल वेरिएबल्स अछि जो चारटा स्पेशल वेरिएबल ता हमर कोन कमांड लाइन आर्गुमेंट ऊपर ही काम करिवो तो फर्स्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट ऊपर जानि दबो तापर देन विल डू ए स्मॉल डेमो द स्मॉल प्रैक्टिस सेशन ऑन द स्पेशल वेरिएबल ओके सो कमांड लाइन आर्गुमेंट कोन the arguments which we pass in the command line in the command sections, right? Whenever we execute a subscripting, the during the executions, what do we do? Using command line argument, we can pass arguments into the script during the executions. The script will execute kariba tari samayre immediately we can pass some arguments. ताकू क्वेश्चन में कमांड लाइन आर्गुमेंट कहती बा आम एटा कोन कहि पारे पोजिशनल पैरामीटर okay positional parameter can be passed so don't get confused whenever somebody asks you questions right so command line argument or positional parameter equal same thing okay so normally linux subscripting रे कोन होची ना जेतले command line arguments होची they are देखो एटी कोन कहि they are the positional parameters right so command line arguments $1 $2 $3 $9 right basically आमे simply जेतबेले पास करूचे ताको रिसीव करिवा पई आमे we can pass until 9 parameters per 9 arguments okay and these arguments can be easily collected starting from $1 to $9 $1 will be first argument $9 will be ninth argument in this format we can collect it we can access it but beyond that मते तो नॉट आर्गुमेंट जदि ताटू अधिक दरकार अछि 15 टा आर्गुमेंट मते पास करि अछि देन हाउ वी कैन पास राइट जदि पास कली then how we can access it that we can access by using a shift command okay हमें the shift यूज करिबा sorry next यूज करिया sorry next command यूज करिबा then we can get it हमें कोन कले $9 माने 9 टा आर्गुमेंट पास कर दले तापर 10 टा आर्गुमेंट नॉर्मली नबनी बा शो करिबन राइट जदियो नबो we cannot access it so what we'll do we'll write next हमने से कोन करबा आउ जेतले $10 हमें लिखिबा देन से $10 रो वैल्यू लेजो गोटे वे रे यूज करबो आउ गोटे वे रे हला with the curly braces रे आमे जेतबे $10th positional parameter बा 10th positional parameter बा 15th positional parameter को हम एक्सेस करिबा how will write we have to write using $curly braces suppose 15 that means this is the 15th arguments or 15th positional parameter 15th parameter but 15th argument we can access this is very important guys whichever is like you feel good right either you can use next is better you can use dollar with curly braces then we can access it so at this point right then how we'll pass these arguments it would demo script जंदी would देजे एटू दीटा केतरा आर्गुमेंट पास करछि दीटा को 10 आ गोटे 5 yeah simply accessing arguments inside the script आमे एटी पास कले आर्गुमेंट एटी पास कर दले तो ताकू स्क्रिप्ट भीतर केमती यूज करिबा by using these positional parameters right from $1 to $n right using $n we can access this positional parameters we can access these arguments inside the script काहे कि ना आमे ए जो पैरामीटर में पास कर सपोज मु गोटे कैलकुलेटर बनौछि मु गोटे किछि कैलकुलेशन बनौछि आ मते पैरामीटर किछि बाहरु पास करिवार अछि तो मु कोन करिवि ताको पास कला पर से आर्गुमेंट जोटा आपण पास करछि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन सेटा को मते एक्सेस करियार अछि we can access using these positional by command line arguments this is the special variables right 1 second
Okay, so clear about the command line arguments, right? So next आमे कौन देखिबा रिडायरेक्शन टा हम परे पड़िबा ता पूर्व आमे जो जहां भी हमें स्पेशल वेरिएबल्स ऊपर जानले बा कमांड लाइन आर्गुमेंट्स विषय जानले तो छोटो गोटे दुईटा एक्सरसाइज करके ताको जानबे केमती जेटा हम यूज करि पाइ राइट so it is both important guys, this is very important, the command line arguments and the special variables, right? So let me connect to the Linux machine. Okay, so what we are going to do now, first let's create a shell script, right? So last class hame kon kartile gote chotto script likhitile jota ki demo script hame likhitile, right? A chotto demo script hame likhitile, my name is Kumar and this is what chotto both chotto script, right? So it will come konti guys, what is this line? Shibang. This is the cbang line by interpreted line by cbang line. Okay, it starts with any script. Whenever you write, you have to specify this line. Okay, and okay, this script we had created in our last class. Now let me create a new file, new shell script, and then we'll execute it. And so I will ask questions during this file shell script creations and executions. Okay, so I'll use VI editor definitely. So let's use VI editor. I'll use this as variable demo dot sh. Variable demo dot sh. New file go create kali. Just open. Then I should now first when I open, I'll be in command mode, right? Now if I press I came to insert mode. Right? Let's start with these things. I'm not going to explain it again. Okay, game bus. Okay, so what we'll do now, we'll talk about this variable demo. So what is the, how we'll write a comment in shell scripting? Subhasri, how we'll write a comment in shell scripting? Starting with a hash. Perfect. So now Anupam, tell me, if I give hash, how the shell scripting will treat this line? Suppose I give hash, I gave here hash. This is a special variable demo. Okay, so how this line will be treated in shell scripting? This should be ignored. This will be ignored. So how the shell script will treat this? This will. So when shell script will find any hash starting wherever will find any hash symbol starts with hash, that particular line will be ignored. And this line particularly we give for some description, some information purposes inside the shell script. Okay. So we'll just write. तो हमें कौन करते जो special variables ऊपर जानते हैं. First we'll start with the special variables like $0, right? तो हम वही लिख दो जी completely echo script name is मैं लिख दली $0 यूज करेगा, right? $0 एटी यूज कर दे डॉलर. तमे आइदर यूज करि परियो डायरेक्टली $0 बा कर्ली ब्रेसेस से भी यूज करि परियो. तो कर्ली ब्रेसेस जदि यूज न करू छामे, then what we can do, I can use simply $0 there, right? It will not work. Let's keep it as $0. Okay, $0. Now let's start. Okay, now tell me how to execute this script. Anybody can tell me? First, we have to change the permission, then we'll
execute by dot slash then the variable one. Exactly. So very good. So first we have to change the execution permissions of this file. So if we check the file permissions, right? So it does not have any executable permissions. So first we have to make it executable, right? Either we can use in octal mode to change this by using chmod command, or we can use the alphabetic mode, right? By using this u plus x, right? So what we can do, we can use chmod u plus x. Suppose I'm going to give only executable permissions to the user, right? Executable permissions to the user only. So then file name. Then now if we do this, see, we got this executable permissions. Now it's good to execute. Let's execute it. So we'll do variable demo. See, script name is dot variable demo dot sh. But the same thing, if I write without the curly braces, what will happen? It also takes. Why? Why it takes? Because it says special variables. Okay. The same thing in our last class, what we saw, we created a variable, and when we access that variable in the echo command, what it says is displayed directly printed that one. It did not dereference that one, right? But as it is a special variable, directly we can use within the double quote without the curly braces, we can use it. Okay, so now if I just declare a variable, right? Suppose I'll just give it as class name equal to. Okay, now I'll give it as Linux, something I wrote it here. And remember, whatever line I'm just writing it here, right? It তুমি দেখতে পারো না মু ইকুয়াল পরে কিছু স্পেস দেইনি দুইটা ভ্যারিয়েবল নেম ଆଉ ভ্যালু ଲାଗିକି ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଯୋଉ assignment operator বা assign କରୁଛୁ ଯୋଉ valueଟା ଏଠି there is no space ଆଉ ଯଦି space ଦେବା କ'ଣ ହବ it will throw error. Just try it, and whenever you're writing କାହିଁକି ତୁମକୁ କହୁଛି ଏଟା because ତମେ ଯେହେତୁ first ନୂଆ ତମେ script ଲେଖିବ ତ definitely there could be chances like you will provide some spaces, right? So space ତ ତମେ error ଜାଣି ପାରୁନ ତ କୋଉଠି error throw କରୁଛି, right? ତମକୁ ଲାଗୁଥିବ ସବୁ ଇକ୍ୱାଲ ଭଲ ସବୁ ଠିକ ଅଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ but why it is throwing error? ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ example ଦେଇକି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ space ଦେଇ ଦଉଛି, sorry ଗୋଟେ space ଦେଇ ଦଉଛି, okay? Then ଏଠି ବି ଗୋଟେ space ଦେଇ ଦଉଛି. Then let's save it, execute କରିବା. See କ'ଣ କଲା? Class name command not found. ତ ଏଠି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା exactly এটা ଗୋଟେ ସେ command ନେଇ ଯାଉଛି, treat କରୁଛି as a command, but class name ଗୋଟେ command no ଆମେ create କରୁଛି as a variable. There is no such command like class name. So ତମେ ଯେତେବେଳେ ବି ୟୁଜ କରୁଛ there should not be any spaces either side. ଯଦି ଏଠି ବି ଯୋଉ space ଟା ରହିଲା then it will throw error. Okay, so there should not be any spaces. ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ସେଇ variable ଟାକୁ just print କରିବି echo class name is, or I'll just write this is the तो केमती गोटे वेरिएबल को हमें एक्सेस करबा बे यूजिंग डॉलर, राइट? क्लास नेम. ओके, तो मैं एठी कोन कली क्लास नेम यूज कली. देन बेसिकली कोन हो जो वेरिएबल टा हमें यूज कले एटा आसीबा कथा, राइट? सेव, लेट्स एग्जीक्यूट इट. It displayed. It
displayed. Okay, maybe the back quote will not work. Directly we can access it by using the dollar. So last class हमें कौन करते ना बैक कोट यूज करके ट्राई करते बैक कोट रे काम करनी बैक कोट रे कौन एग्जीक्यूट करिवो केवल कमांड राइट तो एठी कौन हैला ना डॉलर क्लास हमें यूज कले जोटा कि हमें डॉलर क्लास नेम हमें कौन कले एठी यूज कले एंड इट डीरेफरेंस द वेरिएबल ओके सो हमें जदि किछि भी यूज करिवा राइट एबे हम गोटे छोटो चेंजेस कली थ्रो करिवो एरर किछि सॉरी एरर थ्रो करिवो तो एडी किछि डिस्प्ले करंट कोन दिस इज द ब्लैंक हे गला एटी क्लास एटी किछि वैल्यू शो कलानी तो कोन पई से वैल्यू शो कलानी कि कहयो मते कना एन टा स्मॉल हो ओके सेमिति So, किछि वेरिएबल पाइलानी बस okay so here the class name whatever we have passed right तमे कोन स्मॉल n कर दले आ एटा कैपिटल n अछि तो हमें कोन जानि छी जे लाइनक्स वाला कोन केस सेंसिटिव तमे एठी लाइनक्स कोन ट्रीट कला एटा आ एटा हला टू डिफरेंट वेरिएबल तो क्लास नेम रा हमें किछि वेरिएबल विथ स्मॉल n किछि वेरिएबल ही हमें डिक्लेयर करिने डिफाइन करिने तो सेति पई एठी किछि नेलानी राइट तो बेसिकली हम कौन करिया अछि जत्ते बडी हमें स्केल स्क्रिप्ट लिखिबा तो हमको तो बोले केस ऊपर ध्यान देवाको पड़े राइट जो ऊपर केस लोअर केस सही हिसाब से तुम लिखुथु एक्जाक्टली गोटे वेरिएबल बट से वेरिएबल जोटा थिबो एला जति तुम न जानि कि जस्ट वेरिएबल ना लिखितो बट कोडी अपर केस कोड लोअर केस जानि पार नथिबो त किसी शो कर नथिबो बट बारंबार तुमको देखिबो पड़िबो जे कोन पई देखो टी कोन अछि ना से जे तुम गोटे वेरिएबल को कोन बेसिकली कोन होछि एटी मु कोन करथली स्मॉल नेम गोटे देथली n राइट तो एठी कोन हम तो एग्जीक्यूट कले एठी किछि शो कलानी बेसिकली एटा कोन करे कथा जि पाइथन प्रोग्राम तमे लिखुछ अलगा प्रोग्राम से कोन करबो ना सेठी गोटे एरर थ्रो करबो जे वेरिएबल ता डिफाइन हेइनी जदि डिफाइन हेइनी तमे कॉल केमती करूछ राइट केमती एक्सेस करूछ पाइथन बा अलगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे तुमको एटा ई टाइप रो एरर आसीबो बट शेल स्क्रिप्ट कहूछ इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस रे जे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज रे तो कोन होछ ना से एक्जाक्टली सेटा को से शो करूनी सेटा से जगहटा जो हमें कॉल करिचे सेठी कि से कोन नल देखै दोछि एम्प्टी देखै दोछि त माने से फाइंड पाइलानी किछि गोटे क्लास नेम वेरिएबल अछि सेतमे किछि शो कलानी बट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट विल थ्रो एरर as that variable is not defined तुमको वेरिएबल गोटे यूज करिया आगु आगे ताकू डिफाइंड करिया को पड़िबो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके तो लेट मी चेंज इट अगेन बैक टू सर काले जो हमें हां काले हमें वेरिएबल को कर्ली ब्रेसेस होतिले आज एक कथा तमे सुनो the curly braces actually whenever you are writing any program jabi shell scripting tame lekhuche jabi shell scripting lekhuche by writing in the curly braces is actually professional way you are accessing the variable देखो हमें खाली लिखितले कोन डॉलर क्लास नेम राइट तो एठी कोन हैला हमें यूज कर देले with curly braces राइट सो कोड तुमको बोल लागुची तो एटा हम जानि पाले जे किछ गोटे कमांड बा किछ गोटे वेरिएबल हमें यूज करूचे राइट तो आ गोटे केसेस रे कोन आसी जीवो तो ई जो वेरिएबल बा हमें डिक्लेयर करूचे तो सेठी किछि स्पेशल कैरेक्टर भी थाई पारे तो सेठी कोन खाली डॉलर रे विथ डॉलर इट विल नॉट वर्क तो तुमको कर्ली ब्रेसेस यूज करे पड़ी तो बेटर जे कोनसी स्पेसिफाइड बाय एक्सपर्टाइज प्रोग्रामर तमे देखिवो सबु जाक प्रोग्रामर माने से कोन करथिबो ना विथ कर्ली ब्रेसेस माने यूज करथिबे तमे आइदर विथ कर्ली ब्रेसेस यूज करि परिबो विदाउट कर्ली ब्रेसेस बट कर्ली ब्रेसेस in some cases you have to use curly braces because that program will not interpret that one that cases you have to use the curly braces okay so एठी मु कोन करथली देखो एठी भी जदी हमें $0 सिंपल यूज करथलो विथ $0 that will treat okay but जदी मु एठी curly braces भी दोची right no problem it will also execute see
is the line status and execute. Right? तो most things कोची तुमको जानिबा पड़िबो को केस रे तुमको काम करनु जो टाइम रे तोर वेरिएबल राइट से टाइम रे तमे कर्ली ब्रेसेस यूज करिवो आ गोटे टाइम रे तुमको जोटा कि ब्लैंक तमे यूज करले गोटे सेकंड गाइस गोटे कॉल आछि सॉरी सो जानि पाइलो बिना कर्ली ब्रेसेस रे हमें यूज कर परिबा तो बेले बेले कोन होची ना तमे जो जेम वर्तमान देखिल तुम गडे एक्स्ट्रा स्पेसेस जदी हमें दे दोचे तो एक्स्ट्रा स्पेस रे कोन होची ना एटी एरर थ्रो करूची तो हमें जदी एटी कंप्लीटली एटी गोटे स्पेस दे दबा डॉलर स्पेस देलाडू कोन होची ना देखो एटी वेरिएबल रा ना कंप्लीटली कलर चेंज होची दैट वेरिएबल नॉट वर्क एंड इट विल थ्रो एरर्स see it did not throw any error. It did not throw any error. What it did, it just printed that as simple text. It just printed that simple text because we provided a space here after dollar. So it is dollar would treat color text or it would treat color characterism, right? So kainki na ame kono within the double quote we have used it. जो मुझे स्पेस हटे देली कोन हला तर कलर चेंज हो जाउची डिफरेंट वेज ओके तो हमें कोन गले वर्तमान केवल $0 यूज करतले लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन तापर हमें नेक्स्ट देखिबा कोन बाकी जो कमांड सब रहला ट्राई कर दवा तापर हमें पोजिशनल पैरामीटर ऊपर डिफाइन करबा ठीक अछि पोजिशनल पैरामीटर ऊपर डिफाइन करबा ओके $n $has ई बाकी ई जो चारटा कमांड हमें पर देखिबा वर्तमान कमांड हमें कोन आर ऊपर ट्राई करबा तो कोन करथिला फर्स्ट द एग्जिट स्टेटस ऑफ द लास्ट कमांड एग्जीक्यूटेड आ गुडेला $डबल और डॉलर एक्सक्लेमेशंस द प्रोसेस नंबर ऑफ लास्ट एग्जीक्यूटेड ओके आकु भी हमें यूज करि पारिबा वर्तमान यूज करबी कि तुम जानि परिबनी तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस पोजिशनल पैरामीटर फर्स्ट अदरवाइज ओके कमांड लाइन आर्गुमेंट गुड तो कमांड लाइन आर्गुमेंट हम जो यूज करिबा राइट तो कमांड लाइन आर्गुमेंट को हमें एक्सेस केमति करिबा बाय यूजिंग $1 $2 until $n right तो $1 कौन होगा this will be your first argument and this will be your second argument and this one will be the nth argument right so first let's start accessing or start executing with 2 arguments okay so mate $1 suppose dita mu okay just simple echo statement mu print kali simple बर्तमान से केवल echo ही चली छी बर्तमान जब हम फुल प्रोग्राम लिखिबा तो डिफरेंट वे रे बते देबी हां echo मेटी लिखुची कोन ओके तो एठी मु $1 यूज कली $1 अछि यूज कली तो $1 माने कोन फर्स्ट आर्गुमेंट $1 मन रखता $1 ला फर्स्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट राइट एटा मते कोड पास करियर अछि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस वर्तमान मते शेल स्क्रिप्ट रे किछि इंफॉर्मेशंस नाही तो मते पास करबे एटा कोन ना डायनामिकली तमे किछि भी तमे पास करि परिबो मैं डीटी लिखि दली माय नेम इज रंजीत ओनली देन जेते थर से वेरिएबल टा प्रिंट करबी केवल रंजीत ही प्रिंट हो अंटिल अनलेस आई चेंज द कोड
बट पोजिशनल पैरामीटर कौन होची ना तमे बाहर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस यू कैन पास व्हाटएवर यू वांट my name is and echo $2 सेकंड आर्गुमेंट तो मुझे तो एटा एग्जीक्यूट करिवि एग्जीक्यूट कले कोन हो मते दुईटा आर्गुमेंट मते पास करियार अछि राइट सिंपली मते दुईटा आर्गुमेंट पास करिवि केतले पास करिवि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशंस द फर्स्ट आर्गुमेंट कोन थिला आमे रखितले फर्स्ट आर्गुमेंट कोन सिंपल ना राइट ना पास करियार अछि सपोज मु पास कली ना आउ कोड स्टडी करछि राइट सपोज आई पास कली 12 फाइन इटा आंसर कंक्लूड देखो मु एटी पास कली फर्स्ट आर्गुमेंट कौन है मोर रंजीत सेकंड आर्गुमेंट 12 तो माय नेम इज $1 जोटा में लिखिथिले रंजीत एक्सेस कला और 12 टा सेकंड आर्गुमेंट जोटा माने 12 पास कला राइट the way you pass the arguments that positional that's why it says is positional parameter जो पोजीशन में तुम पास करतो सही पोजीशन तुम एटी एक्सेस करिवो जदी माय नेम इज जगह तुम $2 यूज कर देलो तो कोन से $2 टा फर्स्ट नहीं जीवो सेकंड आर्गुमेंट राइट लेट्स चेंज इट मेटी $1 जगह $2 नहीं गली राइट $2 और एटी नहीं गली $1 तो से कौन होगा भूल देखेला राइट $1 एटी प्रिंट कला $2 एटी प्रिंट कला तो जो पोजीशन में तुम पास करछो सही पोजीशन में तुम जानिथिबा दरकार तुम जेतु तुम स्क्रिप्ट लिखिछो निजे यू आर द प्रोग्रामर you know where you have to access and where you have to access what you are going to access and where you have to access it right so let's now modify it to $2 and $1 simple way रे हमें कौन कले आपको एक्सेस कले जल्दी मु एटा एग्जीक्यूट करबी किछि न देगिरी कोन एरर आसीबो किछि एरर आसिलानी बट किछि शो भी करूना हमें किछि ही पास करिने तो ठीक तो एठे हम जो पास करिने तो एठे वर्तमान नॉर्मली किछि दउनी राइट तो आकु हमें कोन करबा जदी कुछ सेल स्क्रिप्ट हमें लिखुचे and that shell script should accept some parameter बा आर्गुमेंट किछि पास करबार अछि देन हमकु ताकु सही हिसाब रे ट्राई कैच बा कंडीशंस लेखि गिरी हमकु ट्रू फॉल्स रे बा कंडीशंस लेखि इफ एल्स रे लेखि गिरी ताकु एरर थ्रो करबा जे तमे यू हैव टू पास ता यूसेज ता कोन जदी नॉर्मली किछि जानि नथिबो गोटे पिला तो सिंपली आसीबे कोन वेरिएबल demo.sh एग्जीक्यूट करतो बट जानिनी केतरा आर्गुमेंट पास करिया अछि तो एठी कोन हम एग्जीक्यूट कर दला बट किछि एरर ही थ्रो करनी देन इट विल बी लाइक समवन anyone not some anyone cannot right identify what's the problem right so to understand what the program should accept right तो हमको कोन हला से कंडीशन तो हम यूसेज तार लिखि पारी तो सेटा हमें एडवांस सेक्शन रे जतले कंडीशनिंग पढिबा लूपिंग पढिबा कंडीशनिंग पढिबा ता विषय हमें डिफरेंट केसेस रे हमें यूज करि पारिबा राइट हम परे बते देबी तो वर्तमान केस रे कोन हला हम किछि ना किछि पास करिबा राइट तो बहुत सारा कंडीशंस अछि हमें सब जतले कंडीशन पढिबा और लूपिंग पढिबा कंडीशंस के ता विषय बहुत किछि जानि ठीक है जी नाउ ए वेरिएबल डेमो रे हम कोन करछि ठीक है मॉडिफाई करिके हम एटा बहुत सिंपल वे रे नै गले $0 $1 $2 विषय जस्ट जानले त मु कोन करछि किछि गोटे कैलकुलेशंस करूछि राइट मु गोटे कैलकुलेटर बनेबी मते गोटे छोटो प्रोग्राम बनेबी राइट लेट्स delete these two lines okay okay now this is a code there is a question now Swarup tell me I have to delete these two lines what I have to do what should I use I have to delete these two lines this line and this line in VI editor what should I use in one go I have to delete it
To delete a line, what you have to use? Double D. Sorry, Double D. double D, right? If you press double D, it will delete the entire line. And I want to delete these 2 lines. What I have to do? ଯଦି ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ମୋ କର୍ସର ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଯେହେତୁ ମତେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ମତେ କ'ଣ ପ୍ରେସ୍ କରିବି ଇଫ୍ ଆଇ ପ୍ରେସ୍ 2 and double D ଯେ କ'ଣ ହବ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ସେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦବ ରାଇଟ୍ 2 ଆଉ double D 1 second sorry okay so ଆମେ କ'ଣ କଥା ହଉଥିଲେ ଓକେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ କରିବି 2 double D ସି ମାନେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଯୋଉଠି କର୍ସର ଅଛି ସେଇଠୁ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଏସବୁ ତମେ ମନେ ରଖିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ରାଇଟ୍ ଠିକ ଅଛି ତ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ small calculation part ବନେଇବାର ଅଛି using this argument command line argument বা positional parameter use କରିକି right ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ positional parameter use କରିବା ତ suppose ମୁଁ ଦୁଇଟା variable ହିଁ definitely ଦୁଇଟା ନେବି but ମୁଁ ଏଠି twist କରୁଛି ଦେ ଯୋଉ calculation ବନେଇବା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଦିଏ ତାପରେ modify କରିବା ଏଟା କେବଳ ଆମର practice class ରହିବ right ତ simple ମୁଁ ଯଦି କ'ଣ କରୁଛି ଏବେ execute କରୁଛି suppose ମୁଁ ନେଲି ଗୋଟେ calculations बनौची right echo or দুইটা variable বনি যাଉଛି a equal to $1 a টা কোন করিব फर्स्ट आर्गुमेंट होल्ड करिवो तो एठी कोन हैला ना मु गोटे वेरिएबल नेली जोटा कि लोकल वेरिएबल हैला कोन सबस्क्रिप्ट रे सेठी मु कोन असाइन करछि $1 टा जोटा हमें पास करिवा सबस्क्रिप्ट रु सेटा असाइन हबो a को that will get assigned to a right so a will contains now the first argument of the script whatever we execute will pass during the executions then I'll write b equal to suppose $2 b equal to $2 okay now मु कोन करछि ना ए दुईटा को वर्तमान किसी कैलकुलेशंस करिवार अछि तो मु एठी लिखिली सपोज सिंपल वे रे मु लिखि दोछि सपोज सम इक्वल छोटो खाली एडिशन रो बर्तन सम रे ही लिखुछि राइट तो को कमांड यूज करिकरी हमें कैलकुलेशंस करि परिबा लाइनक्स रे व्हिच कमांड expr perfect so we have to use expr simply expr तो मु जो कमांड लिखुछि तादरे एरर रहिबो से एरर टा मते तमे बतेबो मु ऑलरेडी बतै साची लास्ट क्लास से एरर टा कोन पे आसुछि तमे मते कहिबो राइट मु लिखली कोन expr तो मु वर्तमान कोन करबी दुईटा वेरिएबल जोटा मैं एक्सेप्ट करबा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन तक मु ऐड कर जे सम लिखुछि जस्ट ऐड करूछि राइट तो मु कोन करबी एटी $a वर्तमान एटी कोन हला मु $1 दउनी हमें डायरेक्टली $1 देई पाथांती मु एटी राइट
बट एठी मु कोन करली ना $1 को तुमको डिफरेंट वे रे तुम केमती स्क्रिप्टिंग करि परिबो बा असाइन करि परिबो सेटा को मु तुमको देखौची तो एठी $1 रो वैल्यू टा असाइन हेउची a को बट ए रो वैल्यू को मु एठी पुनी एक्सेस करूची एडिशन हिसाब राइट प्लस $b परफेक्ट सम एठी कोन हैला सम गोटे कोन एठी ए गोटे कोन ए गोटे वेरिएबल बी गोटे वेरिएबल सम गोटे it's also variable right sum equal to sum गोटे वेरिएबल क्रिएट कली राइट जो वेरिएबल को मु आर expr यूज करी आर दीटार एडिशंस माने जो मु आर्गुमेंट पास करबी तार एडिशन टा स्टोर हबो सम रे तो मते ए प्रिंट करियर अछि एखो sum of a and b is dollar sum a आउ b रो सम टा होची त रिजल्ट मते शो करियर अछि राइट डॉलर सम बुझी पाल छोटो स्क्रिप्ट लिखुची तुम बुझ अछि जे चेष्टा करो कॉम्प्लिकेटेड लिखुनी राइट बहुत छोटो स्क्रिप्ट लिखुची फर्स्ट हमें कोन करे $1 रे फर्स्ट आर्गुमेंट पास करिबा दला हमें एग्जीक्यूट करिबा एठी $2 दबा एठी ये करिवो राइट तो जदी मु एटा कोन डायनामिकली हमें जेते थरो गोटे छोटो माने कैलकुलेटेड टाइप रो यूज करछे माने हमें डायनामिकली जो नंबर पास करबे तार छ एडिशन हमको शो करी तो हमें जदी स्टैटिकली चेंज करे अछि तो किछि भी गोटी ही चेंज करे अछि देन मु $a को सपोज 10 वैल्यू दे देली एठी दे देली 15 तो 10 15 एडिशन कर देले 25 देखै दबो राइट तो सेटा मु चाहू मु जेते थर पास कर दु से सेते थर तार एडिशन करके मते रिजल्ट टा शो कर राइट सिंपल हे गला नाउ लेट्स सेव इट and we'll execute it right now okay so it says sum of a and b nothing but it got a error throw color jota ki kochi command not found line number 11 right the line number 11 तो ये हमें जानी पारने ना को लाइन नंबर तुम आइदर 1 2 एंती गणी के आसीबो बट जदी बहुत सारा थिबो तुम एटी गणी बाटे भी बोकामी होबो राइट तो हमें यूज करि परिबो कोलन कमांड लाइन मोड रे जदी नम दबा सॉरी टोटल अच्छा टोटल नम ता देखे दला 12 कोलन n दोनी nu no colon so it is 11 serial number sorry colon 11 line right one हाँ 11 लाइन हमें जने मु ना मु एटा एक्चुअली देखौ छी जे नंबरिंग ता देखेबा पई कमांड लाइन मोड रे तो हम जदी 11 प्रेस करबा तो से 11 लाइन को पळेबो दैट इज वेरी सिंपल बट मु तुमको देखौ छी जोटा कि हमें यूज करिया जोटा कि नंबरिंग शो करिवो एडिटर जेंती नोटपैड हम यूज कर नंबरिंग शो करे राइट से नंबर आ गोटे बेस्ट वे है जोटा कि हमें एटा तमे आइदर तमे कमांड लाइन मोड रे सेट nu मारी पाइला तुमको एटा देखे दबो 1 2 3 4 5 6 अप टू 12 और जदी तमे यूज करूछ खाली कॉलम तमे 11 लाइन को जिवार अछि देन गो टू 11 लाइन सो 11 लाइन को जिवो तो ए 11 लाइन रो कोन थिला प्रॉब्लम थिला कमांड नॉट फाउंड कि कहि परयो कोन पई इठी हमें कोन दवा पड़ियो व्हाई इट इज थ्रोइंग bracket maybe bracket Okay. कोन यूज करबे Exactly. जेतु exp एटा कोन होले कमांड राइट जेते कमांड को हमें एग्जीक्यूट करूचे गोटे वेरिएबल रे बाय कोनसी कमांड भीतर है तो हमें लास्ट क्लास से कोन देखले वी हैव टू यूज इन ए सब सेल हमें कोन होले ता पे कोन यूज करथले बैक कोट रिमेंबर जेतोले मु खाली वेरिएबल टा डिक्लेयर कर देथिली नॉर्मली विथ बैक कोट रे काम कलानी कारण गोटे वेरिएबल को हमें रेफरेंस करे गले वी कैन यूज डायरेक्टली डॉलर तो हमको एक्सेस कर दो डॉलर with curly braces or without curly braces it will get access right but ethi ame the command execute karuche then we have to use double quote तो ethi वर्तमान कोन ना गोटे command execute होबो आर आउटपुट टा स्टोर होबो sum रे then
we can access that value by using $. Then now let's save. Let's execute. तो एठी मते 12 आ गोटे पास करे अछि. Okay, 18. See, sum of A and B is 30. 12, 18, 30, right? तो एठी हमें easily we got it. तो हमके एठी कोन दबा पड़ा? बैक कोड दबा पड़ा. तो बैक कोड न दबा ताले से कमांड टा कोनसी एग्जीक्यूट हबनी. जदी हमें चाहूचे सिंपली गोटे कमांड यूज करबा पई किसी गोटे वेरिएबल रे न करी डायरेक्टली यूज कर, देन वी कैन डायरेक्टली यूज विदाउट एनी बैक कोड, राइट? मते एटू यूज करे अछि लेट्स गेट $a प्लस $b. एठी कोन होबो ना, एठी हमो किछि बैक कोड दरकार नाही, कारण तमे जहां भी सबस्क्रिप्ट रे कमांड लिखिबो, किछि भी लिखिबो सेटा एज ए ट्रीट, इट विल ट्रीट एज ए कमांड. एटा गोटे कमांड से ऑटोमेटिकली ट्रीट करिवो. जदी एटा मु एठी सम रे असाइन करूची, देन वी हैव टू असाइन लाइक दिस. जदी एई कमांड को मु डायरेक्टली एठी भी यूज करबी, देन वी हैव टू गिव बैक कोड. So what we'll do, let's save it. See, 30. एठी हमको बैक कोड दवा पड़लानी, कारण हमें डायरेक्टली यूज करछे सबस्क्रिप्ट रे कोनसी जगह रे असाइन करिने कि बा कोनसी कमांड भीतर ताको कॉल करिने. त मु जदी एटा को डायरेक्टली एठी सम न लिखी गिरी ए लाइन टा सपोज मु कमेंट कर दोछि, राइट? ए लाइन टा को मु कमेंट कर दोछि. लेट्स डिलीट दिस लाइन. तो एठी मु जदी सम न लिखी कि भी डायरेक्ट कैलकुलेशन टा कोन करबी ना, ए जो कैलकुलेशंस टा को मु कोन करबी एग्जैक्टली एठी हमें प्रिंट करबा, राइट? मतलब एटा एक्स्ट्रा किछ लिखिया दरकार है मु डायरेक्टली, बट एटा हला गोटे सिस्टमैटिक वे, तार इन सिंपलेस्ट वे, क्लीनेस्ट वे रे हमें कोन करछ, गोटे वेरिएबल नै छै, वेरिएबल को एठी चेंज करछ, क्लियर करछ. जा भी किछि फर्दर चेंजेस करिया छै हमको एठी करिया पड़े ना कि एठी, राइट? बट एठी मदी एग्जीक्यूट कली एको कमांड भीतर वी हैव टू यूज बैक कोड. लेट्स सेव इट, एग्जीक्यूट. सी 30 आगे से पास करेबे 28 पास कले मबे 40, राइट? 25, 27. तो एटा कैलकुलेट करछि, राइट? तो तुम कोड एक्चुअली बोल लागुछि. देखो एक्चुअली व्हिच वन लुक्स गुड, दिस वन, राइट? हम गोटे वेरिएबल क्लीनली गोटे वेरिएबल ना नेले सम, तारा सम टा हमें कमांड यूज करले ई सम टा को हम एठी क्लियर कर दो. बट एठी आ गोटे प्रॉब्लम होछि कोन, हमको अननेसेसरी गोटे एक्स्ट्रा लाइन लिखिबा को पड़ुछि, राइट? तो ए लाइन टा हम डिलीट भी करि दबा, देन हमर गोटे लाइन कमी गला, गोटे वन लाइन कोड कमी गला. तो तुम जो कोड लिखुतो गाइस, तुम सब बळे कोडिंग रो प्रिंसिपल्स हला, देन मिनिमम कोड लिखि कि मैक्सिमम आउटपुट पर मैक्सिमम रिजल्ट तुम पाई पाउतो. अननेसेसरी जोटी दरकार नाही सेठी तुम लाइन लिखियो. तुमके एटा मु बुझौतली जेतु क्लीन वे रे, क्लीनेस्ट वे रे तुम केमति लिखि परियो, किंतु बुझी परियो सही हिसाब रे मु तुमको क्लियर करतली. तो एटी भी मु आउ दुई लाइन कोड डिलीट करिया पे चाहिबी, एटी मु एटा को डिलीट कर देबी, राइट? तबे से कोन करबी, $a $b जगह रे मु $1 $2 एटी दे देबी, राइट? $1 $2. तो इटा तुम जो प्रैक्टिस करियो, बेसिक प्रोग्रामिंग करियो, ए सब आइडियाज तुमको ऑटोमेटिकली आसी. मतलब तीनटा चारटा वे रे तुमको बतेली केमति तुम वेरिएबल एक्सेस करि परियो, राइट? सेव इट. नाउ लेट्स एक्जीक्यूट. सी रिजल्ट देखेला, राइट? तो एठी कोन गला, मु किछि वेरिएबल डिक्लेयर करलिनी, तुमको डिफरेंट वे रे तुमको बते देली बटन तुम केमति वेरिएबल्स सब आर्गुमेंट जो पास हो त केमति एक्सेस करबी, को वे तुम यूज करि पारी. नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू राइट इट. तो एबे मु कोन गली तीनटा लाइन डिलीट कर देली, तर मोर कोड एबे कमी आसीला, स्पेसिफिकली के त 4 लाइन हे गला, 3 लाइन कोड डिलीट हे गला, राइट? तो सेमति तुम यूज करि पारिबो, राइट? तो हमें कमांड लाइन आर्गुमेंट विषय जानले. तो वर्तमान कोन होछि, आ गोटे छोटो प्रोग्राम करिबा, बट से प्रोग्राम टा हमें अलगा कंडीशंस वगैरह पढ़ी साला पर से प्रोग्राम विषय में बते देबी. तो हमें एबे जानले कोन दुईटा आर्गुमेंट पास करले, जदी हमें मोर देन फर्स्ट एक्चुअली कोन नोटा आर्गुमेंट जदी हमें पास करछि कोन विथ $1 to $9 भीतर हमें एक्सेस करि परिबा. द मोर देन 9
command line argument access କରୁଛେ then we have to use curly braces or we have to use next command to get the next one. Okay, simple way रे तो हम एटी sum रो यूज न करी sum ता थाउ किछ असुविधा नै, no worries. तो मु आ गोटे सिंपल एको लिखि दउची positional parameters. Okay, simply what I just example there $3, comma $4, comma $5, comma $6, comma $7, 9 ଆସିଗଲା $9 ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦଉଛି $10, $11 ତ ମତେ କେତେଟା 11ଟା ପାରାମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାସ୍ କରୁଛି, ରାଇଟ? 11ଟା positional parameters বা command line arguments ମୁଁ ପାସ୍ କରୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି $1, $2, $1, $2, ओके सेव इट। तो मैं तो एग्जीक्यूट करूची मते दुईटा गला तो ये एंटर देखो चिकन गला पैरामीटर्स पास कली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आउ 11 टा से बोल देखेला 10 11 को आउ से नाउन से कौन कला फर्स्ट कौन कला स्टार्ट्स विथ द फर्स्ट आर्गुमेंट 12 पुनी 0 1 ऐड करी चला 120 121 बट हमरो कोन अछि 12 अछि आउ 34 अछि 10th जगह रे सॉरी 45 अछि 10th जगह रे हमरो 9th 10th जगह रे 45 अछि आउ 11 जगह रे हमरो 67 अछि हम बहुत सारा पोजिशनल पैरामीटर्स पास कर दै छी, राइट? तो इस आको केमती हमें एक्सेस करिवा, हाउ विल एक्सेस दिस? ओके तो बर्तमान कोन कछि किछटा डिलीट कर दो छी until 67 we have passed हेले कोन होछि ना 9 हे गला कोन हमरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जाई गला तापरे हमें 45 यूज करछि लाइक 10th और 67 यूज करछि 11th एग्जीक्यूट करछि से कोन नॉर्मली 120 121 सो करछि, राइट? जोटा कि फॉल्स रॉन्ग किसी एक्सेस ही नहीं तो एटा को हमें रियली एक्सेस केमती करबा बाय यूजिंग कर्ली ब्रेसेस बा हमें नेक्स्ट यूज कले ताको हमें सही पर्टिकुलर पैरामीटर्स को पुनी स्टार्टिंग विथ 1 रो हमें यूज करबा, राइट? तो मैं आपको चाहूँ यूज करिया पई 10th एक्सेस करिया पई तो मैं ठीक कोन करबो ना कर्ली ब्रेसेस यूज कर दो कर्ली ब्रेसेस 10 तो 9th नंबर पोजिशनल पैरामीटर परे तुम जदी एक्सेस करिया अछि देन यू हैव टू यूज कर्ली ब्रेसेस, यू हैव टू यूज कर्ली ब्रेसेस देन सेव कर दो चिटा को। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट सी बटन 45 और 67 10th और 11th पैरामीटर से एक्सेस कर दे ए वे रे तम पोजिशनल पैरामीटर्स एग्जीक्यूट करबे, ठीक अछि? जानि पाला केमती बाकी जो कमांड अछि क्विकली हमें देखि दबा हमें $n विषय पढी जानि वाला आर्गुमेंट विषय केमती पास करछि तो द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अप्लाइड टू ए स्क्रिप्ट लेट्स सी हमें चेंजेस करबा नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अप्लाइड टू ए स्क्रिप्ट हमें इट यूज कली सपोज डायरेक्टली लिखि दउछि हला डॉलर कोन अछि एटा डॉलर हैश, राइट? डॉलर हैश तापर हमें यूज कली सपोज डॉलर स्टार और सिंपली मैं यूज कली $@ और देखिए कौन कौन आउटपुट केमती आउटपुट आर शो करछि डॉलर हैश कोन करो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अप्लाइड हमें केतेटा आर्गुमेंट्स अप्लाई करिचे से हमको शो करिवो एटा पूरा लिस्ट टा गोटे डबल कोट भीतर पूरा स्ट्रिंग हिसाब रे गोटे शो कर दो आ @ कोन करिवो ताको प्रत्येक आर्गुमेंट को डबल कोट भीतर वन आफ्टर अनदर शो करिवो,
right? Now let's save it, execute parameters, but एठी कौन कला ना command not found, perfect. कि कहबो एटा काई एरर आसला, command not found. These are not commands, right? These are not commands. So how we have to access it? We have to access, either we'll assign this to a variable or directly using echo we can print it. So we have to access it, we have to print it, right? So what we have to use? Echo within double quote we have to write. So guys, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯାହା ବି ତମେ କରିବ ନା ସେଟା ଯଦି ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କରିବ ଏ ଟାଇପ ର ମିଷ୍ଟେକ୍ ସବୁ ଆସିଯିବ ତମର, ରାଇଟ୍? ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏରର ତମକୁ ଶୋ କରାଉଛି, ତାର କେମିତି ତାକୁ ପୁଣି ତାକୁ ୟୁଜ କରିବ ତା ବିଷୟରେ ବି ତମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ରାଇଟ୍? ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ କମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତେ pwd, ତ ଏଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ନେଇଯିବ, କାରଣ କମାଣ୍ଡ କୁ ଆମେ ଏକ୍ସେଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ସେଲ ରେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିପାରିବା। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ସ୍ପେଶାଲ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ, we cannot directly call the special variables in the cell program. We have to either call inside the echo or we can use by using the by assigning to a variable. Okay, तो मुझे क्विकली कौन करछि सब echo command भितर समस्त को कर दो, राइट? echo तो बर्तमान आर वैल्यू सब से प्रिंट करियो, राइट? नाउ लेट्स सेव इट, एग्जीक्यूट। सी एडी कोन कला हमें केतरा 11 टा पोजिशनल पैरामीटर, तो डॉलर हैश कोन कला नंबर ऑफ पोजिशनल पैरामीटर्स पास्ड, और एटा कोन कला स्ट्रिंग रे से शो कर दला, राइट? दीटा को स्ट्रिंग रे ही शो कला। तो हमको एक्चुअली हमें जदी एटा को रिमूव कर दवा, लेट मी रिमूव एवरीथिंग, डबल कोट्स लेट मी रिमूव and directly execute. Same double quote भी दरकार नहीं, right? तो एटी कौन कला जहाँ भी लिस्ट हमें पास करिचे, it gives us directly all the list. Basically it should give with double quote, but I'm not sure why it's not giving this double quote. Okay, fine. तो आर्गुमेंट विषय पोजिशनल पैरामीटर्स विषय जानि गले, तापर हम आउ जो पोजिशनल पैरामीटर सॉरी जो स्पेशल वेरिएबल्स अछि, स्पेशल वेरिएबल विषय हम जानि गले। तो आउ जो स्पेशल वेरिएबल्स अछि तीनटा कोन अछि, डॉलर क्वेश्चन मार्क, डबल डॉलर आउ डॉलर एक्सक्लेमेशन। द डॉलर क्वेश्चन मार्क होछि जोटा कि हमर एग्जिट स्टेटस ऑफ द लास्ट कमांड एग्जीक्यूटेड, राइट? तो हमर लास्ट कमांड कोन हम एग्जीक्यूट करथले, लास्ट कमांड हम एग्जीक्यूट करथले गोटे प्रोग्राम, आर स्टेटस जानियार अछि, तो हम कोन करिवे echo dollar question mark मार देली। तो डॉलर क्वेश्चन मार्क हला गोटे स्पेशल वेरिएबल जोटा कि मार आर वर्तमान ए व्हाट दिस वेरिएबल कंटेन्स नाउ, इट कंटेन्स द exit status of the last command, last executed command, status of the last executed command. See 0, so in Linux 0 means success, 0 पर तो जहाँ भी आसिला सब एरर कोड, सब एरर 1 2 3 4 2 everything will be error. जदि केवल 0 आसुची then it is success. Okay, केमिति मु धर एठी गोटे कमांड यूज करिवि pwd यूज कली, pwd कमांड यूज कली। तो pwd गोटे एक्चुअल कमांड जोटा कि तार सक्सेस रिजल्ट देखला एटा। तो मु यदि ई कमांड रो कोन जो एग्जीक्यूट कली जो कमांड तार स्टेटस जानिया पई मु जदि देबी echo डॉलर मारी कोन 0 देखेला, ता माने कोन ए कमांड ता एग्जैक्टली 0 देखेला। तो मुझे एटी pwd 1 मारली, pwd 1 किछि कमांड ही नाही, एरर थ्रो करिवो कमांड नॉट फाउंड। तो वर्तमान आर स्टेटस हम देखिबा, सी इट गिव्स 127, एनी नंबर ग्रेटर देन 0 विल बी एरर हियर। ओके, तो 0 इतले सक्सेस, तो माने कोन pwd दे सक्सेस देखेला, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, दिस इज फेल्ड, टर्मिनेटेड बाय फेल्ड कमांड, राइट? एटा 127, right? Exit status is 127. तो से जो प्रोग्राम भी हमें लिखिले, धर मैं प्रोग्राम टा हमें एग्जीक्यूट कले, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, राइट? तो एटा को हमें 0 देखेला, राइट? मु से प्रोग्राम के मॉडिफाई कर दोछि, एटी गोटे किछि
आउटसोर्स रखी दउछि किसी गोटे कमांड टाइप जो कमांड डजंट एग्जिस्ट ओके तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करबा एठी कोन हला किछि गोटे एरर देला राइट एबे देखिबा आर एग्जिट स्टेटस कोन रहउछि 0 व्हाई बिकॉज एठी कोन गला लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड राइट और एठी कोन हला लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड अछि इको डॉलर तो मु वर्तमान ए लाइन टा को एठू डिलीट कर दउछि एठी किछि गोटे ऐड कर देली execute command not found now see last executed shell scripted last executed command कौन थिला एटा तो आर रिजल्ट से देला कोन एरर माने फेल हिची राइट तो हमें कोन जानि पइला बे क्वेश्चन मार्क डॉलर क्वेश्चन मार्क टू गेट द लास्ट commands exit status of the last executed command okay तापर कोन अछि आ गोटे लाम कोन डबल डॉलर राइट जदि जानिबी करंट सेल विषय से दबो डबल डॉलर सेल रो करंट कमांड रो बा सेल रो प्रोसेस आईडी राइट प्रोसेस आईडी शो करियो करंट कमांड रो प्रोसेस आईडी तमे जानियार अछि देन इट विल गिव यू 8463 ओके जोटा कि प्रोसेस आईडी नाउ आ गोटे अछि कोन एक्सक्लेमेशंस मार्क परन किछि शो करूनी कारण एक्सक्लेमेशन डॉलर एक्सक्लेमेशन कौन शो करिवो इट विल शो यू द ला exit stat sorry it will show you the PID of the last background job but जो background जब executed background executed job right जो job को हमें background रे execute करतो तार PID हमको शो करिवो तार प्रोसेस नंबर हमको शो करिवो राइट तो हमें एबे के ठीक एग्जीक्यूट करिने बैकएंड रे सपोज मु गोटे छोटो एग्जांपल दोछि मु जो vi वेरिएबल डेमो टा मु टिके मॉडिफाई कर दोछि तो मेठी कोन करछि स्लीप कमांड यूज करछि तो मु आपको वेट करछि सपोज 5 मिनिट्स हले 300 सेकंड्स राइट 300 सेकंड्स में वेट करोछि wq now the question is I want to execute a shell script in backend what should I use in background already तुमको देखे देछि बट लास्ट क्लास में भी केमती एग्जीक्यूट करबा जतले स्लीप रो मन पकाओ जतले स्लीप कमांड हम एग्जीक्यूट करतले सेति बळे हम तुमको शो करै देखैतिले केमती बैकएंड रे how to execute a shell script in backend how to run in the questions as well how to run a shell program in background okay so shell script use करबा with ampersand symbol तमे जदी ampersand symbol यूज करिवो देन कोन हबो सेटा बैकएंड को पळेला देखो बर्तमान मु पळे आसेली एटा बर्तमान बैकएंड रे गला एग्जीक्यूट होउची बर्तमान एग्जीक्यूट होउची बैकएंड रे राइट किंतु काई की बैकएंड रे एग्जीक्यूट हो जेतो हमें स्लीप 300 सेकंड्स देइचे 5 मिनिट्स अब 5 मिनिट पर्यंत से डिले करिवो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन बा वेट करिवो राइट तो ता भीतर मते जदी एबे लास्ट बैकग्राउंड कमांड रो देखो एटी तो हम एग्जीक्यूट करले से ऑलरेडी शो कर देछि बैकग्राउंड कमांड प्रोसेस आईडी कोन ए प्रोसेस आईडी रे ए पर्टिकुलर एटा रन होउची तो मते वर्तमान जानिवर अछि कोटा रन होउची प्रोसेस आईडी मते बी डॉलर क्वेश्चंस मार्क सॉरी एक्सक्लेमेशंस मार्क देबी सी 8626 तो वर्तमान ए जॉब टा मोर ए पर्टिकुलर प्रोसेस आईडी टा बैकग्राउंड रे लास्ट बैकग्राउंड रे यूज हेछि बुझी पाछ जोटा बैकग्राउंड रे यूज हेछि मु ताको फोरग्राउंड को आनिबा पई माने फ्रंट को आनिबा पई मु यूज कर परबे fg कमांड देखो से कोन गला मते फोरग्राउंड को आनला वाली वर्तमान कोन एडी मोर अटैच हे गला टर्मिनल को मो क्रसर टर्मिनल रे प्रॉम्प्ट रे अटैच हे के अछि राइट मते को आ जाउनी किछि जाउनी राइट तो मेडी कंट्रोल सी मारी जदी किछि गोटे प्रोग्राम को तमे टर्मिनेट करियार अछि देन यू कैन प्रेस कंट्रोल सी टर्मिनेटेड से एबे जदी पुनी एको डॉलर एक्सक्लेमेशंस मारी 8626 देखौछि राइट 8626 तो ए पर्टिकुलर से प्रोसेस आईडी को मते
फाइंड करियर अछि कोन रन होउची हाउ कैन आई फाइंड दिस इज आल्सो क्वेश्चंस टू यू टेल मी सपोज लास्ट बैकग्राउंड ए प्रोसेस टा रन होउची मते जे मु जानि नै प्रोसेस आइटे मु कोन रन करिछि मते कोन जानियार अछि केमिति पाई परिबि कि मते क्विकली कहि परिबा हमें ऑलरेडी कमांड रे एटा पढी सारी छे कोन कमांड यूज करिकरी मु एटा को पाई परिबि एटा गोटे कोन प्रोसेस आईडी तो प्रोसेस आईडी चेक करे पे कमांड कोन PS. ps perfect so ps command -ef all process शो करिवो तापर मु गोटे सिंपल ग्रेप करी फिल्टर करके पाइप देली ग्रेप करी गोटे पैटर्न सर्च करी कोन मते 8626 सर्च करियर अछि राइट 8626 see actually it did not show me anything it did not show me anything let's see कहीं ना ये जो प्रोसेस टा जदियो लास्ट कमांड रो ऑलरेडी स्टोर हेक अछि बट आमे कोन करथिले कंट्रोल सी प्रेस करी ताको टर्मिनेट कर दैछे ए प्रोग्राम टा एक्चुअली रन होउनी एको आमे ऑलरेडी टर्मिनेट करी दैछे राइट सेति पर किछि प्रोसेस शो करनी तो मु जदी एटी ps-ef मारी करी ग्रेफ वेरिएबल डेमो ही हमें एग्जीक्यूट करथिले ना वेरिएबल माल एक्चुअली शो करिवा कथा राइट तो सेटा कमांड मु आउथरे एग्जीक्यूट करूछि लेट्स वेट फॉर क्लियर आउथरे एग्जीक्यूट कर मु टर्मिनेट करिन तो वर्तमान सही प्रोसेस टा मदि मारी पुनी एको डॉलर एक्सक्लेमेशन सी नुआ एटा लास्ट बैकग्राउंड प्रोसेस राइट बैकग्राउंड प्रोसेस आईडी टा रन होछि तो एटा को हम जदी पुनी बे ps-ef यूज करी करी सही पर्टिकुलर नंबर टा ई नंबर टा को हम यूज करिबा देन वी कैन फाइंड दैट प्रोसेस सी देखेला राइट एटा ही रन होछि राइट इस जो भी नंबर सो एटा कोन हला प्रोसेस आईडी राइट एटा हला पेरेंट आईडी पेरेंट प्रोसेस तो एटा हला कोन प्रोसेस आईडी ये जो स्लीप कमांड एग्जीक्यूट होजी का भीतरे वेरिएबल कमांड भीतरे वेरिएबल स्क्रिप्ट भीतरे वेरिएबल डेमो.sh भीतरे तो आ जेतु आ भीतर रन होची तो आर प्रोसेस आईडी आर parent id हिजिबो जेतु this command is generated from the parent script so this will be become now variable demo.sh will become this process will become the parent process of sleep so sleep pro process id एटा but the parent process हला एटा कोड variable demo.sh परफेक्ट बुझि पाइले क्लियरली ता विषय सबस्क्रिप्ट विषय में सेतु सेति पे हम कहूची ना हम जहां भी सबस्क्रिप्टिंग करिबा तो यू शुड अंडरस्टैंड क्लियरली हाउ द प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड केमति प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करछ ता विषय निहाती जानबा पड़ी अदरवाइज यू कैन नॉट राइट अ सेल प्रोग्राम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू तो सब एग्जैक्टली सब प्रोग्राम नॉलेज भी थिबा दरकार ठीक अछि तो एठी कोन प्रोसेस आईडी रे पाई गली तो मु जदी प्रोसेस आईडी जानिनी स्क्रिप्ट ना जानि छी तो मु एठी कोन करबी फिल्टर कर परबी वेरिएबल जदी मारिबी वेरिएबल देखो वेरिएबल डेमो रे सर्च कला पाई गला एटा ही तो ग्रेप कमांड भी बहुत जीएनयू रेगुलर एक्सप्रेशन जोटा हम कहउछंती जो फाइंड कमांड ग्रेप कमांड में बहुत यूज करिवो गाइस तो ग्रेप रो जहां भी हमें क्लास करितले ग्रेप कमांड रे जहां भी बेसिक्स पढैतली जति बतैतली आउ केम बतैतली केम सर्च करि पाइबो तो ग्रेप कमांड ऊपर बेसी फोकस करबो तो जाना केमति ग्रेप कमांड यूज होची राइट तो बेसिकली टू फिल्टर आउट patterns we use the grep command okay जानि पाइले हमें मोस्ट ऑफ द कमांड्स वी कवर्ड टुडे स्पेशल वेरिएबल्स आ विषय कंप्लीटली जानिल